अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिज़नेस प्लस। मैं हूं निदा अमीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी इंटरव्यू नाजरीन, और आज का जो मौजू है वो है पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुबश्शिर दागिया साहब। ही इज़ पार्टनर डेटा रिकॉल एंड चेयरमैन ACCA एंटरप्रेन्योर कमेटी। सबसे पहले तो उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो टुडे। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड इट्स रियली प्लेजर ऑफ माइन। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आप जानते हैं प्रोग्राम का नाम ही दी इंटरव्यू है, तो आपके अपने बारे में बताइए और अपने काम के बारे में बताइए। सबसे पहले basically I'm by profession I'm a chartered certified accountant, fellow member of ACCA Global and also member of Institute of Singapore Chartered Accountants, and beside that I'm also partner in Data Recall. Data Recall is actually providing document management services to the industry in Pakistan, and we also have a branch in UK as well. And in Data Recall we are providing not only document management systems but also educating the industry. I mean, we are the pioneer in this sector in Pakistan. We started almost more than a decade ago with a new concept in Pakistan, and at the moment we are providing and educating the industry as well as providing document management services, e-archiving services and various other services to almost all the Fortune 500 global companies which are operating in Pakistan and national conglomerates. Okay, and to whom are you providing data recall services? Yeah, as I said, I mean, we are providing the services to Fortune 500 global companies. I mean, you name it, like FMCGs in the finance sector. We are providing almost to all the finance sector in Pakistan. Beside that, pharma sector is also my clients. We are in fact educating the industry, you know, how to come up with the new ideas, and this also helps in compliance towards, you know, that there are so many regulations and regulatory requirements of Security and Exchange Commission of Pakistan. The FBI is also after various organizations, you know, and always asking for various documents which relates to the previous years, and that is where we helps organization to have a competent and effective system in place towards the compliance mechanism. Okay, you just now said that you've educated the industry, so I want to know, how do you manage their data, how to manage the data? Yeah, I mean, we have a unique system. I mean, we introduced this system first time in Pakistan, and it's very unique in the nature that we actually allocate a compartment. We use the compartment methodology in providing services to our clients, and every document which is being archived using our data recall service is being indexed and barcoded. So it's a foolproof, secured system in place, and at the end of the day, ultimately the clients actually benefiting from our systems. Okay, and what do you do at ACCA? Yeah, I mean, I've been associated with ACCA for the past almost more than 8 years. More than 8 years. I've been part of the ACCA, and I've chaired ACCA MNP for almost 4 years. Yeah, and beside that, I've also chaired their entrepreneur committee, their taxation committee, and I've been part of various consultative documents, and we have been devising and producing various consultative documents as well in terms of, you know, educating the SME sectors how to come up and you know, there is a lack of finance available to the SME sector, and that's why, I mean, just few years ago we came up with a booklet called SME Toolkit, and that's really helped the SME sectors. I mean, devising the concept and of SME sectors, I mean, which is being used worldwide, and educating our SME sector so that they have the avenues in place. They can explore the avenues, that what are the financing avenues available in Pakistan, so that at the moment the crunch the SME feels at the moment, I mean, it is something which really hurts them in towards their growth. So that's how we actually help the SME sectors, you know, towards having financing arrangements. Yeah. ठीक है मुबश्शिर साहब, एजुकेशन के हवाले से भी अब कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक जनरल आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। Education, say, obviously, you know, I would like to start with the importance of education. I mean, that would be great. Yeah, I mean, जैसे कायद हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, he stated that the education is a matter of life and death for our country. He said it in 1947, and one of the philosopher of greatest time, I mean, he said that the difference between an educated person and uneducated person is like a living thing and a non-living thing. That is the importance of education. I mean, and we have literally ignored it in these 70 years, and that I would say, I would say, and I believe that this is criminal negligence on part of the government not to invest
in the education. I mean, you have seen that the importance of education, the Qaid-e-Azam has said it. And I'll just give you an example. I mean, in 1946, जब obviously यहाँ पे British राज था, right? At that time, जो World War II भी हुई थी, तो वहाँ at that time British government जो है वो war tax लिया करती थी in this part of the world, right? So after this Second World War ended, so there was a balance. I mean, which were unutilized, like 45 or 60,000, 50,000 or so. So at that time, the government decided कि भाई ये जो 45,000 बच्चे हैं, वो जो war tax के पैसे थे, to invest in the education, right? They devised various policies, institutionalization उन्होंने की, और they selected 10 or so students, to send them abroad for higher education. And उसमें एक साहब थे, I mean, who was the son of a clerk in Jhan, DC में क्लर्क था, उसका उनके साहबजादे थे. He was one of that student, right? वो पहुँचे ब्रिटेन using this war tax money, right? अच्छा, वहाँ पे उन्होंने फिर मास्टर्स किया फिजिक्स में and mathematics में. And after this, I mean, after mastering the physics and mathematics qualification, तो obviously funding की issue है, यहाँ से government कर नहीं सकी fund. तो at that time, the Cambridge University decided कि okay, we will be funding these students, right? So उन्होंने फिर PhD की physics में. अच्छा, later on 1979 में that person was awarded a Nobel Prize on physics, and that's Pakistani Dr. Abdul Salam. है ना? तो that is where the importance comes in. अब मैं इसकी importance आपको बताऊँ कि ये UN की रिपोर्ट ही है कि $1 invested now will be $10 in benefits in future. So that's the importance education has. और वो हम ignore कर रहे हैं. तो that's why I said जो मैंने initial statement किया, this is a criminal negligence on part of the government not to invest in the education. Right. सर, आपके पास आज मौका है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्या किस तरह के इक़दामात उनको लेने चाहिए? देखिए, as I said, I've been associated with the ACCA, Association of Chartered Certified Accountants Pakistan, and I would say that ACCA is the global body, one of the global body of professional accountants. ACCA is a futuristic body. I mean, in Pakistan, the organizations, the institutions, they should look at the ACCA, how ACCA is dividing its policy, this structure, coming up with various studies, research and insights, and devising its own qualification for these students, so that the students who are ultimately becoming the members have the same level of education, the knowledge as the industry requires. That's where the value comes in. So ACCA being a futuristic qualification, a futuristic body, I would say कि जो हमारे institutions हैं यहाँ पाकिस्तान में, they should allies with ACCA, or maybe just to interact with ACCA to devise their own policy. और ACCA ये तो करता ही आ रहा है. I mean decades की history है. मैं आपको सिंगापुर की history बताऊँ. अच्छा, सिंगापुर में जैसे हमारे पाकिस्तान में Institute of Chartered Accountants of Pakistan है, right? सिंगापुर में Institute of Chartered Accountants of Singapore अब कहीं जाके बना है, कोई 2-3 साल पहले, 4 साल पहले मेरे ख्याल से, right? Before that, there was a joint arrangement between ACCA and Singapore government. So ACCA was devising their accountancy profession for so many years, and ultimately, Singapore government was in a place few years back to have his own institute. So ACCA तो capacity building करता ही है government institutions की, है ना? और in Pakistan also we have been, ACCA have been educating the youth. I mean the increasing capacity of various government sector like Auditor General of Pakistan, SECP का आप देख ले, वहाँ पे भी हमारे members बैठे हैं. Again, and ultimately ACCA also linking, like for example, if there is any government institute who is short of fund, right? So ACCA facilitate them to link World Bank or the organization so that their employees get themselves educated so that they remain relevant to the society. And that is very important. ACCA जो research करता है ना, और ACCA has been coming up with various research and insights, and recently they come up with the 7 attributes that the graduates should have to remain relevant, right? Or not only now, in the future as well. And those 7 attributes are technical and ethical competence. One should have intelligence, creative intelligence, digital quotation, and emotional intelligence, vision, and experience. These are some of the qualities, the attributes, right? One should have at least, so that they remain relevant
फॉर द फ्यूचर। और एट द मोमेंट अगर हम देखें, मैं आपको बताऊं कि हम किस तरह से एजुकेट कर रहे हैं पाकिस्तान। आई मीन जो एजुकेशन सिस्टम है एट द मोमेंट है ना, वो डिकेड ओल्ड है एंड इट्स नॉट प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर रोल्स, आई बिलीव। एग्जैक्टली, दैट्स वेयर आई एम कमिंग इन, कि जो स्टूडेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली जो ग्रेजुएट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर नॉट रिलेवेंट। आई मीन वो 20 साल पुराने, जो मैंने भी 1999 2000 में जो स्टडी किया था, वही टेक्स्ट बुक वो आज वो उनको पढ़ाई जा रही है, राइट? तो दैट इज़ इररिलेवेंट। आई मीन वो आउटडेटेड कोर्स उनको पढ़ाया जा रहा है और दे विल नॉट बी रिलेवेंट। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि भाई विद इन नेक्स्ट 25 to 30 years 50% ऑफ द जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड विल बी एट द ब्रिंक ऑफ ऑफ द डिजास्टर, आई वुड से। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट रिलेवेंट टू द वर्ल्ड, है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, technological advancements, they will just wipe you out. And what needs to be done in this regard then? You to need make things better. Yeah, you need to have a policy in place, right? Policy, in fact, के देखें जैसे आपने कहा कि हमारा जो टॉपिक है how to improve the quality of education in Pakistan. In order to improve the quality of education in Pakistan, we need to improve the quality of teachers in Pakistan. That is right. And for that we need teacher training programs, and awareness is most important. और सबसे ज़्यादा teachers से पहले parents की awareness भी यहाँ पे बहुत important एक part है। बहुत important है, बिल्कुल। और इसमें again मैं example दूंगा ACCA की। ये ACCA since as I said, it's a futuristic accounting body, right? तो जैसे आपने बिल्कुल सही point out किया कि जो train the trainer program है, ACCA has been doing this for many years, right? Okay. And that is the reason we are able to produce so much quality accountants. और आपको मैं अगर फिगर्स में भी बताऊं कि एट द मोमेंट अगर हम तकरीबन 10,500 मेंबर्स वी हैव प्रोड्यूस सो फॉर, राइट, फ्रॉम पाकिस्तान, है ना। और एट द मोमेंट इन पाकिस्तान देयर अराउंड 4,500 और 5,000 के करीब है। बाकी 5,000 कहाँ हैं? दे हैव स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। They are qualified from Pakistan, but they are working in US, East Asia, Europe, Middle East, Caribbean islands, and ultimately they are sending the remittances back to Pakistan. अभी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है ना, तो वो partly is being funded by those professionals who are working abroad and sending money back. तो इसमें ACCA का एक पार्ट है, क्योंकि हमारे हज़ारों मेंबर्स अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहे हैं और दे आर सेंडिंग द मनी बैक। जो भी आपने स्किल्स और क्वालिटीज़ बताई, दीज शुड बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन दीज डेज सो दैट दे कैन मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। एग्जैक्टली। और इसमें फिर जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स का भी एक रोल आता है, राइट? बिल्कुल आता है। दे हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। और अब मैं एग्जांपल अपनी दो, हमारी फैमिली की, राइट? अच्छा, व्हेन आफ्टर पार्टीशन व्हेन वी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, राइट, तो वी वर बेयर हैंडेड, माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड दे वर लिविंग इन जस्ट अ वेरी स्मॉल हाउस, मेरे ख्याल से 15 by 20 का। अच्छा, मेरे वाले साहब मुझे वहाँ लेके गए थे एक बार दिखाने के लिए कि भाई ये प्लेस है जहाँ पे हम ज़माना हमने गुजारा है, राइट? अच्छा, वहाँ से फिर राइज़ हुआ। कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स डिसाइडेड कि ओके, एजुकेशन इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनी फॉर आवर फैमिली। तो मेरे ताया, मेरे चचा, मेरे वाले साहब, दे ऑल एम्बार्क्ड अपॉन द स्टडी और माशाल्लाह से डॉक्टर बने, फिर वकील। और मेरे वाले साहब ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की 1970। ही वॉज द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एट दैट टाइम। और दैट वेयर देयर डेस्टिनी चेंज, एक छोटे से रूम से, आई मीन अब माशाल्लाह से we all are qualified, huh? We are chartered accountant, chartered certified accountant. My another brother is also a ACCA member. और मेरी family में भी, I mean, they are all accountants, doctors, surgeons. All right. Yeah. So education is must. That's where the parents' role comes in. Yeah, you are absolutely right. ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे सब्जेक्ट्स के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको निगलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टॉक अबाउट म्यूज़िक और इफ़ आई टॉक अबाउट अरबिक और सिंधी। अच्छा, अब आप ये देख लें, ये सब्जेक्ट्स जो है ये मैट्रिक सिस्टम है, ये आपको ओ लेवल्स में नहीं दिखेंगे। और फिर आप मैट्रिकुलेशन की, आप मैट्रिक सिस्टम की वैल्यू देख लें, जो कुछ भी नहीं है आज। अब ओ लेवल्स की वैल्यू है, जिसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखें, एजुकेशन के साथ साथ इस किस्म की एक्टिविटीज़, I mean, nowadays, since we are in an era of globalization, right? Yes. So you have to have some other skills as well, and that is where the value comes in, है ना? आपको interpersonal skills होने चाहिए, management skills होने चाहिए। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा because usually parents ये भी कहते हैं कि ये अरबिक और ये सिंधी ये सिखाने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि ओ लेवल्स में भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो सिखाई जाती हैं। जी बिल्कुल। देखें, इसमें देखें अब आ जाता है एक सोसाइटी, राइट? वी बिलोंग्स टू आवर सोसाइटी एंड वी हैव टू मेंटेन आवर सोसाइटी एंड आवर कल्चर। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अच्छा, अब इंग्लिश जो है, राइट, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट, इन ऑर्डर टू डू बिजनेस। सो दैट इज़ वेयर
the parents needs to understand that side by side our culture, we have to make sure that our children are able to connect with the world, right? So so local languages के साथ साथ obviously English भी is something which should give importance towards. यही वजह है कि आज अगर मैं आप पिछले 20 साल की बात बताऊं, है ना, इंडिया और बांग्लादेश ने जिस स्पीड से एक्सेस टू एजुकेशन पे काम किया है, पाकिस्तान ने उसकी आधी से भी कम नहीं किया. और इसके रीज़न मैं आपको बताऊं कि जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल दी UN की कि $1 इन्वेस्टेड नाउ विल बिकम $10 इन बेनिफिट्स इन द फ्यूचर. बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कहाँ खड़ी है, राइट? इंडिया जो है अभी $60 बिलियन, मोर देन $60 बिलियन की IT एक्सपोर्ट कर रहा है. IT एक्सपोर्ट क्या है? इट्स नॉट अ मटीरियल, इट्स अ सर्विस. How they are able to, how they are managed to acquire that much of capability, the capacity, because of the education and the level of universities they have in India. हमने उस पर काम ही नहीं किया यहाँ पाकिस्तान में. That is why we are lacking. हम मुश्किल से 20 अरब की कोई एक्सपोर्ट पे पहुँच रहे हैं, और उसमें भी अब ये एक मज़े की बात बताऊँ को कि इसमें भी देखें सर्विस सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है, जो हम यहाँ पे शो करते हैं 1.5 या 7 बिलियन है, इसमें भी हम अपने आप से ही मजाक कर रहे हैं, है ना. उसमें हमने कोलिशन सपोर्ट फंड की फिगर्स भी बिल्ड इन कर दी हैं. कोलिशन सपोर्ट फंड आपको पता है कि जो मिलिट्री सर्विसेज पाकिस्तान मिलिट्री जो देती है, आई मीन US को, है ना, जो ऑपरेशन और हर ज़रब ज़ब वगैरह, उसकी जो रिइंबर्समेंट्स होती हैं, दैट इज़ क्लब टुगेदर इन द सर्विस टू इन्फ्लेट द फिगर, टू शो के ओके हमारी एक्सपोर्ट सर्विस पहुंच गई $1.5 अरब या $2 अरब. दैट इज़ नॉट द केस. तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को भी. आई मीन दिस इज़, आई मीन आई मस्ट से कि देखिए 2018 है, राइट? तो दिस इज़ द इलेक्शन ईयर. तो आई वुड से कि हर पार्टी को दे शुड कम अप विद द मैनिफेस्टो ऑफ एजुकेशन. नाउ इज़ द टाइम, even though we are already late, I mean late by I would say 2 decades, है ना, लेकिन अब तो अपने मैनिफेस्टो में एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे ले आए, है ना. एजुकेशन का फंड अभी जो हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन पे, इट इज़ लेस देन व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड इन ऑरेंज टेन और एन मेट्रो वगैरह वगैरह. तो इतनी तो इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, है ना. और वी आर थिंकिंग कि हमारी एक्सपोर्ट 50 हो जाए. कैसे हो जाएंगी? I mean, हम अपने साथ ही मजाक कर रहे हैं. I also want to talk about sex education over here, which is also very important and is still not a part of school curriculum anywhere in Pakistan अगर आप देखें तो. तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? Because we have seen a lot of cases अभी recently भी हमने देखे, और ये भी कहा गया कि वो इस चीज़ को भी जो है एक पार्ट होना चाहिए स्कूल करिकुलम का. तो मैं चाहूँगी आप इस हवाले से भी बताएं. उसमें मैं ऑब्वियसली मैं बेसिकली एम्फसाइज करूँगा पेरेंट्स को, क्योंकि वी बिलोंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी, राइट. वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रंस व्हिच इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन आवर रिलीजन एज वेल. तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है. दे हैव टू एजुकेट देयर चिल्ड्रंस, एंड अगेन पेरेंट्स अगर एजुकेटेड नहीं है, राइट, इन दोज एजुकेशन ऑन दो टॉपिक्स, सो दे विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द चिल्ड्रन. तो अल्टीमेटली ये ड्रॉबैक्स तो होंगे. पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, I mean, it can be a part, but again, it should be limited and should be in a way that it suffices the requirement, and maybe the parents should be educated more rather than their students, so that parents actually ultimately educate their children, right? And I agree with you that in school there should be a mechanism in place to educate children as well, so that they are much more familiar with the threats, and in the society. So I agree with you. Yeah. Okay, I also want to discuss this about the cheating and paper out system at matriculation system. We have seen it in front of us. हम लोगों ने देखा भी है. Yes. I mean that is one of the main reason कि जो हमारे drawbacks हैं यहाँ पाकिस्तान में, है ना, कि cheating is very common. आप शहर से अगर हट जाएं, इंटीरियर की तरफ जाएं, तो I mean cheating is very common. It is. है ना. और that and then fake certificates and everything. Fake certificates, cheating and everything is very known. और यही मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन इंडेक्स जो है बेसिकली जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें नेट इनरोलमेंट हम दिखाते हैं कि ओके व्हाट इज़ द नेट इनरोलमेंट इन पाकिस्तान, एंड देन सब डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोविंसेस. एट द मोमेंट हमारी नेट इनरोलमेंट है पाकिस्तान की 54%, है ना. अच्छा, इसमें पंजाब की 59 है, लेकिन नेट 54 है. ड्रॉबैक कहाँ आ रहा है? सिंध में 52 53 पहले खड़े थे, अभी हम 48 पे खड़े हैं. तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स एजुकेशन एंड मेकिंग श्योर दैट चिल्ड्रन आर गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, हम उल्टा जा रहे हैं, है ना. अभी मैं आपको बताऊं कि किसी के इनविटेशन पे मुझे जाना हुआ लास्ट वीक उमरकोट की तरफ, तो वहाँ पे मैंने जो हालात देखे लोगों के, आई मीन दे वर लिटरली ड्रिंकिंग येलो वाटर, द वाटर वाज येलो. अब पानी तो हम दे नहीं सकते, एजुकेशन क्या देंगे? फंड्स हमारे पास ह्यूज फंड्स हैं, but they are not being utilized effectively. I mean,
करप्शन हमारा टॉपिक नहीं है, वरना उस पर तो फिगर्स ही फिगर्स हैं। ठीक है सर, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। व्यूअर्स, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, सी यू राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी इंटरव्यू। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुबशर दागिया साहब। ही इज़ पार्टनर डेटा रिकॉल एंड चेयरमैन ACCA एंटरप्रेन्योर कमेटी। सर, अब तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी टीचर्स के क्राइटेरिया के हवाले से कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ हायरिंग टीचर्स, बिकॉज यहाँ पर अगर देखा जाए तो देयर इज़ नो क्राइटेरिया। यस, ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है। देखें, एक मैकेंजी की एक रिपोर्ट है, दे सेड दैट द लेवल ऑफ सोसाइटी कैन बी डिटरमाइंड विद द लेवल ऑफ टीचर्स इन दो सोसाइटी, राइट। तो एट द मोमेंट अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जो मशरूम ग्रोथ हो गई है स्कूल्स की एट द मोमेंट, राइट, बिसाइड गवर्नमेंट स्कूल, मैं अभी प्राइवेट सेक्टर की स्कूल बात बता रहा हूँ, है ना। तो उसमें आप मेजॉरिटी देखेंगे तो आई मीन द टीचर्स आर एक्चुअली नॉट ट्रेन। आई मीन अगर घर में कोई फारिग है, राइट, और मेजॉरिटी आप देखेंगे फीमेल टीचर्स होती हैं वहाँ पे, है ना। और अगर घर में कोई फारिग है, कोई काम नहीं है, तो उनको भाई स्कूल भेज दो, है ना, वहाँ वो बच्चों से वो खुश रहेंगे। आई मीन दिस इज़ नॉट द वे। आई मीन वी आर जस्ट प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स, है ना। टीचर्स की जो एट्रीब्यूट्स होने, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मैं वही जानना चाह रही थी कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो उसमें किस किस्म की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को दी जानी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर पे सबसे पहले आपको बात करूँगा, और इन ऑर्डर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा, जिसमें दस्ते मासूम को वो लोहे कलम देता है, नौनिहालों को वो कंदील हरम देता है, राइट। रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, टूटता है तो सितारों को जन्म देता है। Very nice. Right, that is the value of teacher, right? That should be the value of teacher in any society, है ना। तो अब students should be able to mold their personality according to the stars, and stars are actually the teachers. तो that is the importance of teacher. और अगर हम टीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं या और वी आर नॉट एबल टू ट्रेन दोज टीचर अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स, social requirement, right? And at the moment, I would again quote the example of ACCA. ACCA actually is connecting the academia with the industry, है ना। अच्छा, academia with the industry के कनेक्ट करने का I mean the importance क्या है, वो ये है so that the level of graduates we are producing should remain relevant. In order to them to remain relevant, they should be educated in a way so that they remain relevant. और हम यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग की बात करें तो हमारा एक प्रोग्राम है ACCA में करते हैं, ट्रेन द टीचर्स, है ना, ट्रेन द टीचर्स। और उस प्रोग्राम के तहत वी एजुकेट द टीचर्स। आई मीन व्हाट शुड द एट्रीब्यूट्स वन टीचर शुड हैव एंड what are the qualities, है ना। अब उसको अगर हम बुलेट पॉइंट्स में डिफाइन करें, राइट, वन अ टीचर शुड हैव academic development, number 1, number 2 they should concentrate on academic development, number 2 is the professional development, and then the ideological development. These are the importance and I would say pillar of any teacher in any society. अब अगर फॉर एग्जांपल एक टीचर ग्रेड 8 को पढ़ा रहा है, राइट, तो ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ 2 to 3 years बिफोर एंड 2 years एटलीस्ट आफ्टर। आई मीन ग्रेड 1 को पढ़ाता है, उसको नॉलेज होनी चाहिए एकेडमिक की, द बुक्स विच एक्चुअली ही इज़ रेफरिंग टू द स्टूडेंट्स एट द मोमेंट, ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 4 years, राइट, सो दैट ही नोज़ कि भाई जो स्टूडेंट्स की नॉलेज क्या है, राइट। और यहाँ पे तो मैंने इस तरह का कोई सिस्टम अभी तक देखा नहीं है। हाँ, नहीं, दैट इज़ द रीज़न ना कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, हम आई मीन वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग अ मास चंक ऑफ पीपल विद नो नॉलेज, नो स्किल्स, है ना। दैट इज वेयर सैलरी ऑफ टीचर्स, देन दिस इज आल्सो द बेसिक इशू, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स की सैलरी भी जो है वो भी काफ़ी कम है। बिल्कुल कम है, और इसी वजह से जैसे चीफ जस्टिस साहब ने सुमोटो एक्शन भी लिया है टुवर्ड्स द फीस ऑफ द एजुकेशन, और इसको इंटरलिंक मेरे ख्याल से करना चाहिए टुवर्ड्स द सैलरीज द टीचर्स आर गेटिंग, यू नो। टीचर्स जो है वो बेसिकली दे आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया कि $1 स्पेंड टुडे विल बिकम $10 बेनिफिट इन फ्यूचर, राइट। तो टीचर्स की ट्रेनिंग पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो कि हम नहीं दे रहे। तो अगेन फॉर दैट रीज़न वी हैव टू हैव अ पॉलिसी इन प्लेस, एंड ACCA इज़ द रोल मॉडल फॉर अस,
वी हैव दिस द एग्जांपल्स आई हैव गिवन टू यू. और एकेडमिक डेवलपमेंट में अभी दोबारा आऊँगा तो टीचर्स की क्वालिटी है, राइट, जो मैंने 3 बताया आपकी, एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड आइडियोलॉजिकल. तो एकेडमिक तो मैंने आपको बताया कि भाई कि उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट ही इज़ इन अ बेटर पोजिशन टू गो डाउन टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट, है ना, एंड देन उसका होल्ड हिज हैंड एंड ब्रिंग इन अप टुवर्ड्स दैट पोजीशन, यू नो. तो अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो देयर विल बी अ गैप कि स्टूडेंट नीचे बैठा हुआ है, उस्ताद यहाँ पे है, वो गैप ही ख़त्म नहीं हो रहा है ना. तो दिस इज समथिंग हैपनिंग इन आवर सोसाइटी एट द मोमेंट, है. तो दैट इज़ वेयर द एकेडमिक डेवलपमेंट कम्स इन, है ना. और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्रेन देमसेल्व्स सो दैट दे रिमेन रिलेवेंट एंड एजुकेट द यूथ. अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना, वो आउटडेटेड है, मैंने आपको बता दिया, है ना. एट द मोमेंट जो नॉलेज का ज़ख़ीरा है ना, वो टेराबाइट गीगाबाइट्स में डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है. और we have to make sure, the teacher has to make sure that whatever he is teaching should be relevant to the current level of, you know, the requirement in the society. और यही वजह है कि ACCA consistently he is revising own education programs, है ना. जैसे मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो I did my CAT, Certified Accountancy Technician. At that time number crunching was very common, right. At the moment we are ACCA has revised a policy of coming up with various new ideas, right, so that the graduates we are producing remain relevant, है ना. तो at the moment what we are producing is relevant because of the fact that we are constantly evolving, है ना. और जो रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड की, द नॉलेज द वर्ल्ड नीड्स, यू नो, टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो दैट इज शुड बी इनबिल्ट इन एंड ग्रेजुएट सो दैट दे रिमेन रिलेवेंट. रिलेवेंस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. वो इस वजह से कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि इंडिया और बांग्लादेश की, उन्होंने जो काम किया है इट्स जस्ट ट्वाइस स्पीड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. दैट्स वाई उनकी एक्सपोर्ट 60 पे पहुँच गई, हम लोग अभी खेल ही रहे, यू नो, नंबर क्रंच में. ठीक है. अच्छा सर, यहाँ पे आपने बात की तो यहाँ पे एक मेजर इशू एक और ये भी है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर स्कूल्स में, फिर चाहे हम DHA स्कूल्स की क्यों ना बात करें, अच्छे से अच्छे स्कूल्स की क्यों ना बात करें, बच्चों की तादाद आप देख लें, एक क्लास में उन्होंने 35 to 40 स्टूडेंट्स होंगे और टीचर एक है. Yes. तो वो किस तरह से कंसंट्रेशन जाएगा बच्चों की तरफ, किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं? ये वजह यही है ना. देखिए हम लोग मशरूम ग्रोथ हो गई उसकी स्कूल्स की. इनको पता ही नहीं है कि भाई कि हाउ टू यू नो एजुकेट द चिल्ड्रन एंड व्हाट शुड बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टीचर, है ना. दे शुड रिसर्च. आई मीन आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, आप टाइम स्पेंड करें, इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, लर्न योर सेल्फ. माइक्रो लेवल पे एजुकेशन कैसे की जाती है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स अवेलेबल. आप गूगल करें, लेकिन वो करना ही नहीं. आई मीन जो एक समझे एक दरिया नहर बह रही है तो बह रहे हैं सारे, ऐसा नहीं है ना. प्राइवेट स्कूल सिस्टम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? प्राइवेट स्कूल सिस्टम के हवाले से, प्राइवेट अबाउट द हाई फीस एंड देन लो क्वालिटी. जी, हाई फीस जो है ना, इट इज़ ऑब्वियसली अ कंसर्न, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगेन यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि वो स्कूल जो और ए लेवल्स की तरफ जा रहे हैं या वो एजुकेशन उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर फार मोर बेटर दैन आवर लोकल ग्रेजुएट्स और लोकल, यू नो, इंटरमीडिएट्स. रीज़न बीइंग के O and A levels की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, राइट, दे आर रिलेवेंट टू द करंट सिनेरियो, दे आर कंस्टेंटली इवॉल्विंग. और हम वही पढ़े जो हमारे मेरे ख्याल से बाप दादा के ज़माने की किताबें अभी तक वही चली आ रही हैं. एग्जैक्टली, दैट इज़ रियली ड्रॉबैक, यू नो. और यही वजह आती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, है ना. अब स्कूल्स हैं, स्कूल के मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, दे शुड बी प्रोफेशनली डेवलप एंड आइडियोलॉजिकली डेवलप एज वेल. अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि टीचर शुड हैव अ आर्ट ऑफ गिविंग द नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट्स. अब ये आर्ट कहाँ से आएगा? टीचर शुड कंसिस्टेंटली इवॉल्व देमसेल्व्स. जैसे हमारे प्रोफेशन में होता है CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट. तो इसी तरह से टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, प्लस दे शुड बी अ मैकेनिज्म इन प्लेस सो दैट दे शुड बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपडेट देमसेल्व्स, है ना. तो ये दैट शुड बी रिक्वायरमेंट. और अगेन ये पॉलिसीज़ में हम डालेंगे तभी कहीं जाके होगा, है ना. अदरवाइज तो हम यहीं ढोल पीटते रहेंगे. ठीक है. तो सर बात करें पाकिस्तान की तो 2.5 करोड़ बच्चे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, दे आर आउट ऑफ स्कूल, जिसमें लड़कियां जो हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है. क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, आउट ऑफ स्कूल की अगर मैं बात करूं तो एट द मोमेंट हमारी 23 मिलियन स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ स्कूल एट द मोमेंट, यू नो. एंड दिस इज़ आई मीन आई वुड से कि ये
ये फिगर सबके पास है, एवरीवन नोज है, राइट, बट दे आर रिमेनिंग साइलेंट एट द मोमेंट। रीजन बीइंग कि हमारे जैसे 2 4 5 खानदान जो काबिज हैं, राइट, इनके बच्चे तो अमेरिका या इधर उधर पढ़ रहे हैं, राइट, और अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहे हैं, वो आम आदमी कर रहा है ना। तो वी आर रियली इट्स अ डायर नीड एट द मोमेंट टू कम अप विद अ effective education policy, and that should be in the manifesto of those political party in 2018। और अब मैं आपको बताऊं कि 43 हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, राइट, 43% ऑफ दोज स्कूल्स, ये यूएन की रिपोर्ट है, स्कूल्स इन द कंट्री आर इन अ डेंजरस कंडीशन एंड लैक बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइक फर्नीचर, फैन, डोर्स, हमने खुद देखा है ये, जब अक्सर कभी ऐसा होता था कि सेंटर्स पढ़ते थे तो वी हैव सीन इट, देयर इज़ नो लाइट, टॉयलेट का वहाँ पे बुरा हाल है, और मतलब आप कह ले लाइट्स वहाँ पे, फैंस वहाँ पे, कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉपर नहीं है, बुरा हाल है, बेड़ा गर्क किया हुआ है उन्होंने, किया हुआ है बिल्कुल। और इसी में अगर मैं बताऊँ पाकिस्तान की देखिए रैंकिंग होती है, राइट, एक्सेस टू एजुकेशन एंड बेसिक फैसिलिटीज़, तो पाकिस्तान जो 168 पे आता है और टोटल 188 है, तो आप समझ लेंगे हमसे नीचे कौन होंगे। ठीक, अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी अबाउट देयर आर नो रिफॉर्म्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कोई इदारे नहीं हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा है इस पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? देखिए इसमें अगेन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसे मैंने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में ये होना चाहिए, दिस इज़ अल्टीमेट टाइम आई वुड से, है ना। प्लस अगर ये नहीं करती है तो हमारे चीफ जस्टिस साहब वो सुओ मोटो एक्शन लें, और इन्होंने ऑलरेडी वैसे ले भी लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है हमारी टू एजुकेट एंड टू गिव एक्सेस टू एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। अगेन अच्छा एक और बात कहूँ कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि 48 या 50% इन पाकिस्तान हैव एक्सेस टू द एजुकेशन, इसके देयर आर नो क्राइटेरिया टू मेजर। अब मैं आपको रिपोर्ट बताऊँ यूएन की, राइट, वो कहती है कि वी कैन नॉट मैनेज व्हाट वी कांट मेजर, राइट। तो इतना बुरा हाल किया हुआ है कि देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू मेजर द लर्निंग कर्व ऑफ एन एजुकेशनिस्ट, है ना। तो जब आप मेजर ही नहीं करेंगे तो आप मैनेज कैसे करेंगे, राइट। तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड दे सेड दैट इट्स एन एक्यूट स्कैर्सिटी ऑफ सिस्टम्स फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम्स। ये मैं यूएन की बात बता रहा हूँ। एंड दिस लैक्स सिस्टम, दिस द लैक ऑफ मेजरमेंट वीकन्स द एविडेंस बेस फॉर डिवाइजिंग पॉलिसीज एंड रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज पॉलिसीज टूवर्ड्स द प्रायोरिटीज़। तो इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है ना एट द मोमेंट। तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है, और यही वजह है कि देखें अब जैसे प्रोफेशनल लाइक ACCA, हमारी मुख्तलिफ कमिटीज़ हैं, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स एजुकेटिंग द यूथ। इसी तरह से हमने और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जो कि अब वो आगे आ रही हैं और दे आर वर्किंग टूवर्ड्स एजुकेटिंग एंड गिविंग एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू द यूथ। और अब मैं आपको बताऊंगा एक ऑर्गेनाइजेशन थी EFS, हाँ, अच्छा, दे वर एक्चुअली दे वर डूइंग रिमार्केबल वर्क, सडनली दे डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन। अच्छा, and why is that? I mean, उनका मॉडल क्या था? They were actually going door to door in the society, okay. Like in the slums of a city, और वहाँ पे जाके वो पेरेंट्स से बात करते थे कि भाई ओके आप अपने बच्चों को इसी स्कूल में भेजें विच इज़ नियरेस्ट टू देयर हाउस, एंड फिर वो स्कूल को अडॉप्ट करते थे। उनकी कैपेसिटी, उनकी ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग, एंड देन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फीस सो दैट जो है वो पढ़ सकें। अच्छा, अल्टीमेटली क्या हुआ एट द एंड के उनके रास्ते में इतने हर्डल्स डाले गए कि जो उनकी फंडिंग थी, है ना, उनको जो फंड कर रहे थे। अच्छा, और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह से ब्रिटेन गवर्नमेंट जो वो भी फंड करती है ना, तो वो फंडिंग फिर रोक दी गई। अल्टीमेट इतने हर्डल्स डाले गए कि भाई वो हो ही ना सके। तो अल्टीमेट मैंने कहता है प्रायोरिटीज़ में ही नहीं है कि एजुकेशन को आम किया जाए। और एट द एंड ऑफ द डे देयर वर आई थिंक मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो कोई यहाँ से 25,000 स्टूडेंट्स उनके अंदर पढ़ रहे थे, है ना। ऑल ऑफ अ सडन वो गायब हो गए बिकॉज ऑफ द फंडिंग प्रॉब्लम। तो 25,000 स्टूडेंट आ गए, वो अगेन बैक टू पवेलियन, है ना, वही लेबर में चले गए, चाइल्ड लेबर में चले गए, और ये वो। तो ये तो अलमिया है हमारा। अच्छा सर, मैं आपसे फ्यूचर के बारे में भी जानना चाहूँगी। अगर यही हाल रहा तो अगले 5 साल में, 10 साल में आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का? इतने फ्लॉज हैं। हाँ, नहीं, इसमें अगेन फ्लॉज तो हैं, लेकिन वी हैव टू वर्क टुगेदर, राइट, बिट बाय बिट, है ना। वी आर ऑल्सो कलेक्टिवली इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, टू गिव द सोल्यूशन, है ना, टू गिव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन टू द सोसाइटी। और छोटा छोटा जितना भी हो,
ख़ुद अपनी बेसिस पे आप NGOs के थ्रू या ख़ुद एक कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड्स सोसाइटी। और इसी तरह से जैसे मेरे वालिद साहब हैं, आई मीन उन्होंने भी एजुकेशन पे काम करना शुरू किया हमारी कम्युनिटी में, है ना। एट दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेटिंग और गिविंग इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। और नाउ माशाल्लाह से अभी hundreds of students have completed their graduation, some of them have MBAs and some of them have gone abroad। तो कम्युनिटी लेवल पे ये कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी हमें, है ना, सो दैट के एक कुछ भी हो, बीइंग अ प्रोफेशनल, है ना, वी शुड गिव समथिंग टू द सोसाइटी। ठीक है सर, आखिरी मैसेज भी आपका लेना चाहूँगी। अभी हमने सिंध की बात की, बट यहाँ पे बलूचिस्तान की भी अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इफेक्टेड एरिया रिगार्डिंग एजुकेशन। जी बिल्कुल। और बलूचिस्तान में अगर एक्सेस टू एजुकेशन की बात करूँ तो वो 33% पे है ना, और ये अमंग्स द लोएस्ट है। बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं हैं, है ना। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स हैं और अपने अपने कबाइल बनाए हुए हैं, और दे एक्चुअली डिप्राइव देयर ओन, उनकी जो अपनी कौम है, राइट, दे शुड नॉट बी एजुकेटेड, इट इज़ इन देयर पॉलिसी। अगर वो एजुकेट होंगे तो दे विल राइज अप, तो उनकी जो इजाज़तदारी है वो ख़त्म होगी, है ना। तो अगेन ये पॉलिटिकल विल इसमें चाहिए, है ना, टूवर्ड्स कमिंग अप विद द सोल्यूशन एंड ब्रिंगिंग पाकिस्तान आउट ऑफ दिस डिजास्टर्स। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर दागिया साहब आपके वक्त का आज। नाज़रीन, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते फिर एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।